तो क्या हमारे मूल अधिकार इमरजेंसी के टाइम पे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उसी तरह से उनका इन्फोर्समेंट होता है? क्या हम अपने मूल अधिकारों को उसी तरह से इंजॉय करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऐसा है क्या? या ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? क्या हमारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, या अगर हो जाते हैं तो किस हद तक हो जाते हैं? क्या सारे के सारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं और आपको समझना चाहिए। एग्जाम में कई सवाल भी इन सेगमेंट से पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस विद आवर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यू नो, जो हमारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? अनुकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? क्या स्टेट की अथॉरिटी सारी खत्म हो जाती है और वो किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इंजॉय करती है, वो अथॉरिटी किस हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है? तो ये सारे एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। अगर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करें हम इमरजेंसी के प्रभाव के बारे में, तो इसको हम 3 हेड्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। At the same time, we shall try to understand the effects of emergency on the financial matter. So let's try to understand each of these effects of national emergency. On 3 heads we have written the effect of national emergency on the center state relationship, effect of national emergency on the life of Lok Sabha and state assemblies. Yes, this one more point I would like to discuss here itself, that what happens with the life of the Lok Sabha and the state assemblies once emergency has been proclaimed, the proclamation has been done by the president, then what shall happen with the life of the Lok Sabha? Lok Sabha की जिंदगी के साथ क्या होगा? लोक सभा का जो ऑर्डिनरी टेन्योर है वो 5 साल का है। क्या लोकसभा एकदम से खत्म हो जाएगी, उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या उसके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है एक बार में? ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं, तो हम इन सारे सवालों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, यू सी, right? Effect on the life of Lok Sabha and state legislature, effect on the center state relationship. So let's try to understand each of these. First one we are going to do now, effect on the center state relationship. You see here, effect on the center state relationship. What happens when national emergency is proclaimed in our country, and then what happens as far as the center state relationship is concerned? So we are going to understand this on 3 heads: the executive impact of the national emergency, the legislative impact, and financial impact as far as the center state relationship is concerned. So let's try to understand the executive one. Once the proclamation of national emergency is done in the country, at the same time all the executive power of the state governments shall be transferred to the central government, right? State government shall not enjoy any power. State governments shall start working as a kind of device of the or instrument of the central government. Central government shall be vested with the authority to take any executive, any administrative action. At the same time, the state governments can also take some kind of action, but that should be in consonance with the union government's action, right? So एक्सिक्यूटिव मामले में ये होता है। व्हाट अबाउट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जो लेजिस्लेटिव रिश्ता है सेंटर स्टेट के बीच में, यू नो वेल, वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज डन इन द कंट्री, एट द सेम टाइम ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स eligible to make laws on the state list, all subjects of state list, the matters, the subjects which are enumerated in state list, suddenly the union government or the central governments gets authority to make laws on the state list also. In ordinary condition, when there is no emergency, then union government is vested with the authority to make laws on the union list, and state lists, on the state list the state governments make laws, you know well, and on concurrent list both the governments can make laws. But जैसे ही इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन होती है, immediately central governments gets authority to make laws on the state list also, right? Yes, it is reality that state assemblies are not suspended. They can do proper work, they can make regulations also, but those regulations must be in consonance with the parliamentary laws which has been made on the state list. ठीक है, ऐसा होगा। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में भी हमने पढ़ा है कि कुछ स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। बट ये जो एक रिक्वेस्ट का एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है। जनरली स्पीकिंग द स्टेट्स एंजॉय राइट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, बट हियर यू सी, जैसे ही इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हुई, इमीडिएटली स्टेट्स लेजिस्लेचर शैल बी देयर, दे शैल नॉट लूज देयर एक्सिस्टेंस, बट
the union government, the union legislature, particularly the parliament, shall enjoy the right to make laws on the state list also. Okay. What shall be the validity of these laws which the parliament has made on the state list? Those laws shall be continuing during the operation of emergency, and once emergency has ceased to exist, जब इमरजेंसी खत्म हो गई, उसका रिवोकेशन हो गया, उसके 6 महीने बाद तक उन लॉस की वैलिडिटी रहेगी. एंड जैसे 6 महीने बीते, दोज लॉज शैल लूज देयर वैलिडिटी, एंड अगेन द स्टेट असेंबली शैल बी इंटाइटल्ड और शैल बी enjoying authority to make laws on the state list, right? Okay. Now the next point I have written here for you, the president ordinance. What about the ordinance? During the ordinary circumstances, when the parliament is not in the session, then how the parliamentary laws, how the central laws are made? There is provision for the promulgation of the ordinances. President and governors enjoy the right to promulgate the ordinances. Again, at the same time, when there is emergency in a country and the union government wants to make laws on the state list subject, and the parliament is not in the session, at that point of time the president is vested with the authority to promulgate ordinances on the state subjects, state list subjects, right? So ordinance making power bhi hai president ko, ye bhi humne samajh liya. And at the same time, what about the financial relationship which is there between the center and state? As far as the financial relationship between the center and state is concerned, so during the operation of national emergency, the president can modify the natural distribution of the finances between the center and state. तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि जब नेशनल इमरजेंसी फोर्स में है, उस टाइम पे वो जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंसेस का सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको वो मॉडिफाई कर सके, उसको वो चेंज कर सके. उसमें मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, कुछ डिक्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं. फंड्स को डाइवर्ट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर मैटर, किसी पर्टिकुलर मोटो के लिए, उद्देश्य के लिए. तो ये सारा कुछ फाइनेंशियल में भी प्लीनरी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ट्रांसफर हो जाती है. सो बेसिकली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन नटशेल, वी कैन से that during the operation of emergency, as far as the center state relationship, our states lose their authority. They are there, their assembly is there, their assembly is not suspended, they are they are in existence. Despite the fact they are in existence, वो उनकी सारी जो अथॉरिटी है वो सडनली पार्लियामेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है. ईदर एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर और this financial power, all the powers get vested with the parliament or the central government, and central government starts taking all the executive decision, legislative decision and the financial decisions. That's why we say in nutshell our federal system gets converted into the unitary system, right?